Friends, hope you're doing well. Last time we talked about parameter passing and returning styles in C++, and today we are going to cover very important topics, and those are constructors, destructors, and overloaded operator. देखिए कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर सिस्टम तभी इन्वोक करता है जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमने बात की थी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट्स को यूज़र डिफाइंड टाइप भी कह सकते हैं। एंड अगर हम कोई यूज़र डिफाइंड टाइप बना रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम उसका कंस्ट्रक्टर बनाएं जो कि सिस्टम इन्वोक कर सके जब हम उस ऑब्जेक्ट या यूज़र डिफाइंड टाइप को डिक्लेयर करें। तो आइए बात करते हैं हम अपनी पुरानी स्फीयर क्लास के बारे में। देखिए इस स्फीयर क्लास में इस बार 3 प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हैं जो कि है एक द रेडियस, दूसरा है नम एड्स जो कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, एंड तीसरा है हमारा स्ट्रिंग पॉइंटर एड्स। आइए बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्टर कैसा दिखेगा। तो ये जानने से पहले देखते हैं कि what we expect out of this sphere class we have with these 3 private member variables. So देखिए मेरा अगर कोई sphere A है, मैं चाहता हूँ कि उसके पास एक रेडियस हो। So let's say मैं उसका रेडियस कहता हूँ initially since it's a double, मैं कहता हूँ कि initially उसका रेडियस है 3.2, okay? And initially let's say we want number of attributes to be 3. Let's say it can be anything. So 3, and our next one is uh, a string pointer, and let's say we want that string pointer to be an array of string whose length is of size 3, or we can say whose length is of number of attributes. Okay, so क्योंकि adds एक string pointer है तो जो भी अरे होगी सो ऑब्वियस सी बात है उसमें हम स्ट्रिंग ही डाल पाएंगे। सो आइए लेट्स से जब हम डिक्लेयर करें इनिशियली एक अरे, सो उसमें हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 चीज़ें हों। लेट्स से एक पहले वाले में हमारे पास एक स्ट्रिंग हो सकती है नेम ब्रेड, दूसरे में हम वी कैन राइट समथिंग लाइक जूसी, और तीसरे में कुछ भी डाल लो, मे बी क्रंची। wait a second, crunchy. So हम चाहते हैं जब भी हम अपना ऑब्जेक्ट स्फीयर डिक्लेयर करें तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारे 3 प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यूज़ ये हों। लेट्स से आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो आइए उसका कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। ओके, हम ये पहले भी कर चुके हैं, सो आई एम एज्यूमिंग you already know how to write a constructor of an object or a user defined type. तो आप अपना लिखिए, मैं अपना लिखता हूँ, and then we can match each other's answers. Okay, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। the radius equals 3.2, num adds equal 3, and let's say then we have to initialize some space for our string pointer. So let's say adds equal new string, and since we want that adds string pointer to be an array of string, so we have to do something like square brackets num adds. देखिए ये num adds इसलिए किया हमने क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी इनिशियल लेंथ num adds जितनी हो। सो अब मैंने हीप में एक अरे डिक्लेयर कर ली एड्स, एंड देन उसके बाद हम चाहते हैं कि ये वैल्यूज रेड जूसी क्रंची हो। सो वी कैन डू समथिंग लाइक एड्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 equals red,
red and adds 1 equals juicy and adds 2 equals crunchy. So आपने देखा, this is how we declare, or this is how we implement our constructor in this case for user defined type, or you can say object named sphere. So ये हम पहले भी कर चुके हैं, so it would be pretty straightforward for you. So आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की. So देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में जानने से पहले देखते हैं कि ये यूज़ कहाँ होता है और यूज़ कौन सी सिचुएशंस में होता है. So आइए देखते हैं. सबसे पहले आप इस कोड को देखें. इस कोड में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आप किसी कोड को एनालाइज करें तो सबसे पहले उसके मेन को देखें. सो लेट्स से आइए उसके मेन को देखते हैं. तो मेन में हम स्फीयर ए एंड स्फीयर बी डिक्लेयर कर रहे हैं. सो जब भी हम कुछ ऐसा स्फीयर्स डिक्लेयर करेंगे तो सिस्टम हम अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा जो हमने डिफाइन किया होगा. ओके, सो this is already done, and then it will initialize or blah blah blah, we can do anything with it. and फिर उसके बाद हम my fun में अपना sphere A पास करेंगे. so okay, my fun को देखते हैं. देखिए, my fun is taking parameter by value. so since we are passing the parameter by value, मैंने आपको पहले भी बताया था, it will copy everything over, राइट. मैंने आपको बताया था कि इस A का एक कॉपी बनेगा स्टैक पे, एंड फिर माई फन इम्प्लीमेंट होगा एंड इट विल मेक चेंजेस टू द कॉपी इट मेड, नॉट द ओरिजिनल वन, राइट. सो इस केस में हमारा सिंस अ न्यू कॉपी इज़ बीइंग मेड, सो इस केस में हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा. एंड और कौन से केस में होगा, सो आइए देखते हैं इसका यूज़ टू क्या है. और इन सिचुएशन में होगा, लेट्स से हमारे पास हम डिक्लेयर करते हैं स्फीयर ए, एंड दूसरा हम चाहते हैं कि वी कुड डू समथिंग लाइक दिस, स्फीयर बी, और ब्रैकेट्स में उसके हम ए डाल दें. एंड व्हाट वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट, वी मीन कि जो हम अपना नया स्फीयर डिक्लेयर कर रहे हैं बी, उसके जितने भी प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स हैं वो सारे ए वाले हों. So this is how we write in C++. जब भी हमें एक नया ऑब्जेक्ट में हमें पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ डालनी होती हैं, so this is how we declare in C++. So in this case a copy constructor is invoked. So in these two cases copy constructor is invoked. So आइए बात करते हैं copy constructor कैसे लिखते हैं. एंड देखिए, कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं इससे पहले मुझे ये क्वेश्चन एड्रेस करना चाहिए कि कॉपी कंस्ट्रक्टर हम क्यों लिखते हैं. हम कॉपी कंस्ट्रक्टर इसलिए लिखते हैं क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर C++ प्रोवाइड करता है वो बड़ा ही मेसी होता है. एंड आइए मैं आपको बताता हूँ वो किस तरीके से मेसी और अजीब होता है. एंड द डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स. आइए देखते हैं. लेट्स से ये है हमारा स्फीयर बी. देखिए, स्फीयर बी में द रेडियस है उसका 1.8, उसके नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं इनिशियली 3, एंड उसकी तीसरा है उसका स्ट्रिंग पॉइंटर एड्स, एंड इट इज़ पॉइंटिंग टू एन अरे. And the values are red, juicy, and crunchy. Okay. So now let's say कि हमारे कोड में कुछ ऐसी लाइन है, like wait a second, कुछ ऐसी लाइन है sphere A braces B. So इस केस में copy constructor कॉल करेगा system, and what it will do, it will make a member wise copy of B.
ओके सो यहाँ पे वो एक ए बना देगा स्टैक में एंड वो मेंबर वाइज कॉपी करेगा. सो द रेडियस 1.8 था बी के केस में, इट विल मेक इट 1.8 and now maths will be 3. एंड देखिए जो हमारा एट्रीब्यूट्स है एड्स एड्स इज़ अ स्ट्रिंग पॉइंटर एंड मैंने आपको पहले भी बताया था पॉइंटर्स स्टोर मेमोरी एड्रेस. सो जहाँ भी ये यहाँ पे जो भी मेमोरी एड्रेस था इट विल गेट कॉपीड ओवर हेयर. सो usually it always stores memory address of the memory block it is pointing to where the data is stored at. So हमारा जो नया स्फीयर बना है वो भी पॉइंट करने लग जाएगा इस जगह को. See the problem in this case is that कि हमारा जो नया स्फीयर है A उसके पास कुछ मेंबर्स तो अपने इंडिपेंडेंट हैं एंड कुछ शेयर्ड हैं. So which can lead to many problems in real world programming. So what we actually want कि उसके पास एक अपना space हो and या उसकी कुछ अपनी values हो यहाँ पे, but हम चाहते हैं कि initially वो सारी same हो क्योंकि that is what copy constructor does, right? कि since it will make a member wise copy वो क्या करे कि अपनी एक नया मेमोरी स्पेस एलोकेट करे एंड उस मेमोरी स्पेस में जो भी डेटा है वो वही हो जो पहले वाले स्फीयर में था. ओके सो लेट्स कोड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इन दिस केस. सो पहले हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे. द रेडियस इक्वल्स orig dot the radius, right? and फिर उसके देखिए हमने ये कॉपी कर लिया and then we would like to copy this like num adds. So we would do something like num adds equals orig dot num adds, right? and then we would like to allocate some space, a space of its own, right? So we would do something like adds equal new string and इसके अंदर हम डाल देंगे num adds. Okay, and then in order to copy these values over, so we would need a for loop. So let's code it. For int I equals 0, I is less than num adds I plus plus. Okay, and then we would do something like adds I equal orig dot adds I, and in this case this for loop will copy read the first value of B to the first value of A, second value to the second value and third value to the third value. तो देखिए इस केस में ये for loop हमारा सारी values copy कर लेगा and what we expect from our copy constructor is done. So देखिए copy constructor कोई बड़ी चीज़ नहीं है. copy constructor कब invoke होता है जब हम कोई भी user defined type हम pass करते हैं by value, and जब भी हम एक नया user defined type declare करते हैं and we want its members to be the same as the one we declared previously in our code. So in these two cases copy constructor is invoked, and the problem with the one C++ provides us by default is that it is very messy because उसके अंदर कुछ चीज़ें अपनी इंडिपेंडेंट होती हैं और कुछ शेयर्ड होती हैं. सो व्हाट वी नीड टू डू इन आवर कॉपी कंस्ट्रक्टर कि एक उसका एक नया स्पेस बनाएं एंड फिर हम सारी वैल्यूज़ कॉपी करें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉपी कंस्ट्रक्टर. सो आइए बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में कौन कौन सी चीज़ें
बहुत अलग थी जो हमने पहले नहीं देखी। तो देखिए, मुझे लगता है कि आपको इस स्लाइड में दो डॉट ज़रूर होने चाहिए, जो कि है why do we have this keyword constant in parameter brackets, and why are we passing by reference not by value or by pointer by value. So देखिए, पहले बात करते हैं why do we have constant in before parameters. See, देखिए, हम कॉपी कंस्ट्रक्टर से अपने क्लाइंट को कॉन्फिडेंस दिलाना चाहते हैं कि when you are calling a copy constructor, or when your system is calling copy constructor, it is not changing the original object you are passing. It is only making a new copy of it. So it is a very good programming practice uh, to have keyword const inside the parameter, just to give your client confidence that it is not changing, it is not making any changes to the original object. And the reason we are passing it by reference is because अगर हम वैल्यू से पास कर रहे होते, देन अगेन मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम पास बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग पास करते हैं, इट मेक्स अ न्यू कॉपी ऑफ इट, एंड व्हेन इट मेक्स अ न्यू कॉपी ऑफ इट, इट invokes copy constructor. And since we do not have any mechanism to copy that object over right now, since we are writing copy constructor, so हमारा सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है कि यार तुम कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख रहे हो एंड तुम एक और कॉपी बनाना चाहते हो, मैं कैसे करूँ? सो आपका सिस्टम बहुत कंफ्यूज हो जाता है, एंड इट विल गिव यू अ कंपाइलर एरर, आई एम एज्यूमिंग. So that is why we pass by reference, because we do not have mechanism. So passing by reference is definitely a safer option. So आइए बात करते हैं डिस्ट्रक्टर्स की. देखिए, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का ही काउंटर पार्ट है. कंस्ट्रक्टर यूज टू इनिशियलाइज द values of private member variables and used to allocate space, right, if needed. So डिस्ट्रक्टर एकदम उसका उल्टा है. डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब हम अपना ऑब्जेक्ट डिलीट करते हैं, और या फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट स्कोप से बाहर चला जाता है, देन सिस्टम हम अपने आप उस मेमोरी को क्लियर कर देता है हमारे लिए. सो जब वो मेमोरी क्लियर करता है हमारे लिए, दिस इज़ व्हाट इट कॉल्स डिस्ट्रक्टर. सो आइए देखिए डिस्ट्रक्टर क्या करता है. देखिए, सिस्टम हमें एक डिस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट देता है, बट आइए देखते हैं वाई इट इज़ नॉट सफिशेंट इन आवर केस. देखिए, ये हमारे पास स्फीयर ए है, एंड इट हैज़ अ रेडियस, it has numads, and then it has some memory on the heap and some values in it. देखिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें डिस्ट्रक्टर मिलता है वो इसको गार्बेज कर देता है, इस वैल्यू को गार्बेज कर देता है, एंड देन वो अपने पॉइंटर जिसके अंदर एक मेमोरी एड्रेस है उसे नल पे पॉइंट करने को कह देता है. बट इन दिस केस इट लीक्स मेमोरी, बिकॉज ये जो मेमोरी थी हमारी, now there is no way to access this memory and it gets leaked. And मैंने आपको पहले भी बताया था that managing heap memory is totally a responsibility of a programmer, not a responsibility of the system. So in order to be a good programmer, you have to free this memory first. So in this case we will write our own destructor. So आइए लिखते हैं destructor. So what we have to do, all we need to do is to delete this piece of memory we have allocated. So in this destructor, all we need to do is delete apps. And yes, we are done. So देखिए, डिस्ट्रक्टर में कुछ नहीं था. डिस्ट्रक्टर is just a counterpart of constructor, but all you need to do in destructor is free all the heap memory you have used or you have allocated in your constructor or any other helper function. So देखिए, destructor is called in two situations: when you delete your object, when you delete your object,
or when your object goes out of scope. Out of scope. So yeah, this is all about destructor. And if your constructor or any other helper function, any member function allocates dynamic memory, then you need a destructor. And जैसे कि मैंने आपको करके भी दिखाया था, destructor typically consists of sequence of delete statements. So that's all about today. So today we talked about copy constructors, we talked about destructor. मैंने आपको बताया copy constructor तब कॉल होता है जब हम अपने एक ऑब्जेक्ट को पास करते हैं बाय वैल्यू, और या तो हम एक नया ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं एंड वी वांट इट टू बी अ कॉपी ऑफ द प्रीवियस वन. सो इन दीज टू केसेस we need a copy constructor. Then we coded हमने copy constructor को कोड किया था. It was pretty easy, and then we shifted on to destructors. Destructors के बारे में हमने पढ़ा था that जो हमें by default destructor मिलता है, that is not good enough if we are allocating some memory on heap. And since heap memory is totally our responsibility as a programmer, we need our custom destructor, so we write one. Okay, and it is nothing, just a bunch of delete statements. So next time we are going to talk about overloaded operators. So bye for now.